So in the equation 107, 1.7, chemical balance, chemical equation 1.7, you can see that you have balanced oxygen atoms and hydrogen atoms, but still the equation is imbalanced. Why? Because the iron atoms are still imbalanced, still more and less in products and reactant side, and iron atoms are still unequal in both sides. So finally, you have to equalize the iron atom in both right hand side and left hand side. What to do for that? Nothing. Very easy, very simple. Observe the equation very carefully. You have three elements or three atoms of iron in right hand side in products. Okay, you have three atoms of iron in right hand side. Simple, nothing to do. Just take 3 as the coefficient of iron in left hand side. Right? Just take 3 as the coefficient of iron in your reactant side. So after that your equation becomes 3Fe plus 4H2O, that gives rise to Fe3O4 plus 4H2. That is a balanced chemical equation. As per your textbook, the equation is 1.8. 1.8. So this is the way to balance the chemical equation. Okay. If you if you look the equation, now if you look the number of atoms, tabulate the number of list out the number of atoms in a table. But draw as as earlier draw the table of three columns. First is number of elements, second is number of atoms in reactants, third is number of atoms in products. List out the elements in the reactants, what all you are using, that is iron, hydrogen and oxygen in first column, element column. Now second, in reactants column, list out the number of atoms of each element in reactant side. In reactant you have three atoms of iron. Write down 3 in the second column. That is column of by name number of atoms in reactants in front of iron. And observe number of atoms of iron in products. You have 3, so write down 3 in third column. Similarly, the number of atoms of hydrogen you have 8, 4 to the 8. Write down 8 in second column, in reactants column, and in product column if you observe we have 4H2O, that means 4 atoms of double bonded hydrogen, that is 8 atoms of hydrogen. So write down 8 in the third column in front of hydrogen. Similarly, in front of oxygen, write down 4 in reactants column and 4 in products column. Why? Because you have 4 atoms of oxygen in reactants and 4 atoms of oxygen in products. So this is your balanced chemical equation. Okay. Now, last step in balancing chemical equation. And this last step is not very important to balance the chemical equation, but for convenience and understanding, you can write. Listen here. Every chemical reaction has the elements, reactants, and products, and each element, as we all know that element can exist in three states: liquid state, solid state, and gaseous state. And sometimes what happens, the chemical reaction that is undergoing will have some particular conditions with that. That means the chemical reaction will undergo in presence of temperature, in high temperature, in presence of pressure, or in presence of catalyst, right? So these things we have to indicate in the equation. So how we should indicate these things? If you are giving if you are providing high temperature, so that temperature range should be indicated above the arrow mark, right? Above the arrow mark, which is initiated from product reactant side, and which will be terminated towards the product side. That arrow mark which you will be having in between the reactants and products,
above that arrow mark indicate the temperature. What temperature, what range of temperature you are using for that chemical reaction? For example, in your equation 1.11 in your textbook, that is given as CO, carbon oxide plus H2O. That this reaction is undergoing. This reaction is reacting under the temperature of 340 atmospheric pressure, right? So this 340 atm atmospheric temperature you have to write above the arrow mark. Similarly, this equation is, if this equation is undergoing the below the sunlight, in presence of sunlight, in presence of heat, you have to write sunlight as you have to write as sunlight above the arrow, above the arrow. So this is the method of symboling the chemical equations. Okay. हाँ बच्चों, तो बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करने के साथ साथ लास्ट स्टेप और इजी स्टेप ये है कि आपकी केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो तीन अलग अलग स्टेट्स में हो सकते हैं। यानी कि या तो वो गैस हो सकता, या फिर वो सॉलिड हो सकता, या फिर वो लिक्विड हो सकता। तो लिक्विड है, आपके जो रिएक्टेंट्स हैं क्या वो लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, वो आपको इंडिकेट करना होगा। वो आपको कैसे इंडिकेट करना होगा? वो आपको रिएक्टेंट के बाजू एक स्मॉल सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर इंडिकेट करना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपके टेक्स्ट में हम अभी एक इक्वेशन बैलेंस की, कौन सा इक्वेशन बैलेंस किए? आयरन प्लस वाटर इन द गैसियस फॉर्म गिव अस टू आयरन ऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ पे आयरन जो है, लोहा जो है सॉलिड फॉर्म में है, तो आयरन के सामने आयरन का Fe का जो सिंबल है, केमिकल सिंबल Fe, उसके बाजू एक ब्रैकेट में S लिख देंगे। और वाटर जो एक गैसियस फॉर्म में है, वेपर भाप के शक्ल में है, भाप गैस है, तो इसलिए चूंकि वो गैस है इसलिए वाटर के बाजू हम स्मॉल g लिख देंगे। हमें रिजल्ट क्या मिला? आयरन ऑक्साइड Fe3O4। ये आयरन ऑक्साइड जो है ये सॉलिड है, ये गैस नहीं है, ये सॉलिड है, ठीक है। और ये सॉलिड है इसलिए हम इसके बाजू स्मॉल सर्कुलर ब्रैकेट में जस्ट लिख देंगे। और इसके बाद जो हाइड्रोजन रिलीज हुआ, वो गैस फॉर्म में रिलीज हुआ, तो चूंकि हाइड्रोजन गैस है इसलिए हम G लिख देंगे। और हर इक्वेशन, हर केमिकल रिएक्शन किसी ना किसी कंडीशन के तहत काम करता है। दैट मीन्स उसके अतराफ या तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, या तो वो सनलाइट में होता है, या तो उसे प्रेशर ज्यादा दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें भी हमें इंडिकेट करना है। अगर आप रिएक्शन को, अगर आप अपने केमिकल रिएक्शन को टेम्परेचर दे रहे हैं, आप उसे आग दे रहे हैं, यानी आप उसे गर्मी दे रहे हैं, तो टेम्परेचर आप कितना दे रहे हैं, वो टेम्परेचर का जो कैलिब्रेशन मैग्नीट्यूड है, नंबर है, उस नंबर को आपको एरो मार्क के ऊपर लिखना होगा। वो एरो मार्क जो रिएक्टेंट से शुरू होकर प्रोडक्ट तक जाता, वो एरो मार्क पे आपको टेम्परेचर या फिर प्रेशर या फिर वॉल्यूम या फिर कैटलिस्ट जो आप यूज करते हैं वो चीजें आपको वहां पे लिखनी होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 1.11 में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जो रिएक्शन हुआ वो 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में हुआ, तो वो 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो एरो मार्क के ऊपर इंडिकेट किया गया। दूसरा इक्वेशन आप देख सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस वाटर से, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड का के बीच में जब रिएक्शन किया गया तो वो रिएक्शन धूप में रखा गया, धूप में किया गया, ठीक है, धूप के अंदर, धूप के मौजूदगी में। so we have to indicate as sunlight above the arrow that starts from reactant to product। एरो जो बीच में है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एरो मार्क है, उस एरो मार्क के ऊपर आपको केमिकल रिएक्शन की कंडीशंस लिखना होगा, यानी किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन बना किया गया, ज्यादा टेम्परेचर देकर या कम टेम्परेचर देकर, या टेम्परेचर को कम करके या प्रेशर कम करके या प्रेशर ज्यादा करके या कैटलिस्ट ऐड करके, क्या कंडीशन दिया गया, वो कंडीशन जो है आपको उस एरो मार्क के ऊपर इंडिकेट करना होगा। तो ये है ये हुआ केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका।